हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड healthy and doing your studies properly. In my previous video, I have started the fourth chapter of VISTAS, The Enemy by Pearl S. Buck. I hope you all have watched that video, and if not, then I am providing you the link in the description. So let's start the next part of the chapter. I have already told you that Sadao and Hana, Dr. Sadao and Hana, in the misty night, they have found a wounded soldier, and that soldier was from American Navy. It means he was their enemy because America and Japan was not having good relation with each other. They were the enemy country, and Sadao and Hana carried that soldier, that POW, I have already told you, prisoner of war, to their home, and they have kept him in their Sadao's father's room. Okay, and Hana requested Yumi to wash that soldier and clean his wound, but Yumi has denied to do that, and that's why Hana has washed his wounds and cleaned his body. After that, they both were discussing that what to do, and Sadao found it was really very risky for him if his operation was not done immediately. They both were discussing with each other with what to do next. वो लोग परेशान हैं, वो लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि उसके साथ क्या करना चाहिए. देयर वॉज क्वेश्चन अराइजिंग इन हानाज माइंड कि अगर वो ऑपरेशन के बाद ठीक हो गया, जिंदा बच गया, तो क्या होगा. इफ ही वुड बी अलाइव, देन व्हाट विल हैपन. एंड ऑन द अदर हैंड, इन सदाउ's माइंड, another question is arising that if he would die, then what would happen. कि अगर ये मर गया while doing the operation, then so they both were just discussing about the result, about the consequences of bringing that soldier at their home, because they know, being a patriotic man, it was not good to keep that enemy at their home, as they both were a true Japanese. They were the patriotic people, but they know that being a doctor, it was their first duty to save the life of a human being, and at that time they were treating him just like a body. So after that, what happened? Sadao finally started the operation, and he asked Hana to hold the anesthetic. Anesthetic means behoshi ki dawai. What he asked? Just to provide anesthesia at the time of operation, so that he would not move his body. क्योंकि ऑपरेशन करते समय अगर वो जरा सा भी हिल गया तो इट इज गोइंग टू बी वेरी रिस्की फॉर हिम. सो दैट्स व्हाई, एंड व्हाट ही सेड कि इट इज वेरी इजी. हाना वाज वेरी, यू कैन से, नर्वस अबाउट दिस, बिकॉज शी हैज नेवर डन दिस वर्क बिफोर. उसने इससे पहले ऐसा काम नहीं किया है. आपने देखा होगा कि कई बार हम टीवी पे किसी का ऑपरेशन होते हुए देखें तो, एंड किसी का बहुत ब्लड निकलता हुआ देखें तो वी फील वेरी अनकम्फर्टेबल. ऐसा लगता है कि हमें वॉमिटिंग के पाउट्स आ रहे हैं, बहुत अनईजी फील करते हैं. तो द सेम वॉज विद हाना ऑल्सो, क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऑपरेशन नहीं देखा है तो वो बहुत अनईजी फील कर रही है. बट सदाओ सेड इट इज़ वेरी ईजी. जैसे ही वो कभी हिलने लगेगा तो तुमने सिंपली एक कॉटन में थोड़ी सी ये मेडिसिन डालनी है और उसके नॉस्ट्रल्स के पास दूर से थोड़ा सा उसको स्मेल कराना है. ज़्यादा अगर डोज हो गई तो वो कोमा में भी जा सकता है. सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट द डोजेस. नाउ ऑपरेशन वॉज स्टार्टेड बाय सदाओ, बट एज द ऑपरेशन वॉज स्टार्टेड, हाना फेल्ट द बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. इट मीन्स उसको वॉमिटिंग आने को हुई. आपने देखा होगा जिसे हम कहते हैं उबकाई सी आना. सो ही वॉज जस्ट फीलिंग एज इफ शी इज गोइंग टू वॉमिट. सो दैट्स व्हाई शी ran outside. वो भागकर बाहर चली गई. And at that time, Sadao was doing the operation, and he was just listening the sound of vomiting, that he was trying to vomit.
and at that time he was just moving with his knife very harshly. वो बहुत गुस्से से irritate होके अपनी knife को move कर रहा है, because he loved his wife very dearly and he knew this thing is at that time she was in pain, she was just not comfortable, so that's why he wanted to go to her. वो उसके पास जाना चाहता है, he wanted to just be with her, but as he was doing the operation, so it was not possible for him to move outside, so that's why he was getting irritated. After that, Hannah came back and just started helping her husband in operation by just providing the anesthesia. As she was just leaning, अब जब वो उसके ऊपर झुकती है उसको एनेस्थीसिया की मेडिसिन देने के लिए, तब उसने क्या नोटिस किया, that there was some scars. What she noticed, that there was some scars on his neck, and that was just showing that how brutally he has been treated. Now she is recalling the instance of General Takima. बेटा इसे ध्यान से सुनेंगे, because General Takima is also very important character of this chapter. आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था that General Takima was there, who has not allowed Sadao to go with the troop, as he was very selfish, because Sadao was the only doctor who could treat him in case of emergency, and that's why he didn't send Sadao, and he has just asked him to stay there with him, because what excuse he has given, as Sadao was doing the research on a medicine which could directly penetrate into the wound. So let's stop it here, because I have just reminded you about General Takima. Hannah is just thinking about him, क्योंकि हर व्यक्ति के बेटा दो फेसेस होते हैं, एक पर्सनल लाइफ में और एक प्रोफेशनल लाइफ में. एंड जनरल टाकिमा वॉज वेरी क्रूअल इन हिज पर्सनल लाइफ, एज ही यूज्ड टू बीट हिज वाइफ वेरी ब्रूटली. लोग आपस में बात करते थे, लोग इधर उधर से जो सुनते थे, जो यू कैन से जो गॉसिप्स होती हैं, सो थ्रू दिस हाना हैज heard about General Takima that he used to beat his wife very brutally, and that's why she was thinking, when one can beat one's wife so brutally, then how he is going to treat the enemy. जब कोई अपनी वाइफ को इतनी बुरी तरीके से मार सकता है, तो फिर वो दुश्मन के साथ कैसा व्यवहार करेगा. Now she is having some sympathy with that POW. POW, prisoner of war. What type of sympathy? It means how that his face was so fragile, he was just looking very innocent, and that's why she was feeling that how one can treat him so brutally. He is such an innocent fellow, कितना देखने में innocent लग रहा है. And at that time Sadao was busy in operation, and then something was you can say found by Sadao near the kidney, and that was bullet. यानी कि जो गोली लगी हुई थी वो जस्ट किडनी के पास लगी थी. And after the operation, that bullet was removed. Okay, and in this way Sadao has saved the life of the enemy, and the enemy's name was, I have already discussed, the name is Tom, or you can say POW also, prisoner of war. But after operation आपने देखा होगा कि जिसका भी ऑपरेशन होता है, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा निकल जाता है, तो दैट्स वाई वीकनेस आ जाती है. तो द सेम हैपेंड with Tom also. He became very feeble and weak. Okay, and Sadao and Hannah saved his life, and they treated him very well, though they were just questioning to themselves that why they are saving, but even though they don't know. With this question, they were puzzled, but finally they have saved his life. But its consequences were really very hard for them, as they have to bear the oppose of their servant. We will discuss about it just now, but before this, please note down this notes. Have a screenshot of this. Sadao was very puzzled because
now his servants were not ready to live with that enemy. वो नहीं चाहते थे कि enemy और ज़्यादा दिन तक सदाओं के घर में रहे, because they all know कि इसकी वजह से उसका मास्टर डेंजर में आ सकता है. But even then Sadao was not ready to allow that enemy to go without complete recovery. So that's why he was trying to make his servants understand कि वो जैसे ही ठीक हो जाएगा वो उसको पुलिस के हवाले कर देगा. He is going to hand over him to the Japanese police or army. Is this clear? Now servants protested to this and they wanted to leave their job. उन सब ने ये कहा कि अगर वो यहाँ रहेगा तो वो अपनी जॉब छोड़कर वहाँ से जा रहे हैं. बट सदाओ वॉज फर्म एट हिज डिसीजन. वो अपने डिसीजन पर फर्म था और उसने इस बात से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. दो दे वर स्केयर्ड बोथ हाना एंड सदाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सर्वेंट्स बाहर जाकर इस बात की इंफॉर्मेशन किसी को दे दें एंड दे विल बी इन डेंजर. मे बी दे आर गोइंग टू बी अरेस्टेड. But even then they have taken the risk. Now gradually that prisoner was recovering. Okay. Next day, the general has sent a messenger. General Takima has sent a messenger to call Sadao. Now they were scared. Maybe he has been informed about the presence of the enemy. उन लोगों को लग रहा था शायद जनरल को ये पता चल गया है कि उनके घर में एनिमी है, उन्होंने एनिमी को शेल्टर दिया हुआ है. इज दिस क्लियर? बट एज ही रीच्ड ओवर देयर, जैसे ही सदाओ वहाँ पहुँचता है तो जनरल ने उसको किस लिए बुलाया था? जनरल चेकअप के लिए. उसको कुछ प्रॉब्लम थी, उसको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए उसने डॉक्टर सदाओ को कंसल्ट करने के लिए बुलाया था. बट डॉक्टर सदाओ हैज जस्ट taken the, you can say, utilized this opportunity and he has shared that secret of enemy, that the enemy was there with them at their home. उसने बताया कि उसने enemy को shelter दिया है, but this was not their purpose that they are going to provide any security. Rather they were just fulfilling their duty of as a doctor. They want to just treat him and they are sure about this that as he is going to recover they will hand over him to the police. यानी वे बात उन्होंने जनरल को बिल्कुल क्लियर कर दी सदाओ ने कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगा उसका इरादा कुछ ऐसा नहीं है कि वो उसको वहाँ पर अपने यहाँ शेल्टर दे रहा है, अपने यहाँ कोई आसरा दे रहा है. नहीं, उसका सिर्फ मोटिव इतना है कि वो एज अ डॉक्टर उसको ट्रीट करके ठीक करना चाहता है और जब वो ठीक हो जाएगा तो वो उसको पुलिस के हवाले कर देगा. अब जनरल वॉज वेरी सेल्फिश, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है जनरल ताकिमा इज अ वेरी सेल्फिश मैन. अभी वो सोचता है कि अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो सदाओ को 100% उसे पनिश करना पड़ेगा. और अगर सदाओ को पनिशमेंट मिल गया तो उसका ट्रीटमेंट कौन करेगा? बिकॉज सदाओ वॉज अ वेरी गुड डॉक्टर एंड ही कैन, हु इज ही? जनरल ताकिमा कैन ओनली रिलाई अपॉन सदाओ. और उसकी पूरी ही वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन सदाओ फॉर हिज ट्रीटमेंट. सो दैट्स वाई ही एंश्योर्ड, what he ensured to Sadao, that he will send some assassins to kill that prisoner and he need not to worry about him. And moreover he said this thing also, that he need not to share this thing to anyone. उसने ये भी उससे कहा कि उसे ये सीक्रेट, ये बात किसी और से शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि वो अपने किलर, अपने प्रोफेशनल किलर्स भेजकर उसको मर्डर वहाँ पे उसका घर पे ही करवा देगा. और सिर्फ मर्डर ही नहीं करवाएगा बल्कि उसकी बॉडी भी रिमूव करा देगा. एंड व्हाट ही एंश्योर्ड, बिकॉज ही विल सेंड सम प्रोफेशनल्स, सो डेफिनेटली दे विल kill him in this way that even a single drop of blood will not there, and he will those killers who will just come, they will remove his body also silently, so no one will come about this. और इस तरह से उसका ये पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा.
Now Sadao came back to his home, but he didn't share about this thing even to his wife. On that night, while they were just sleeping, he was mentally prepared because general has given one instruction also. उसको एक instructions दिया था that he is supposed to open the window as well as open the window so that those assassins will get the passage to enter into his room so that they can easily kill him, ताकि वहाँ अंदर जाने का उसे रास्ता मिल सके. तो अब उस रात जब वो लोग सो रहे हैं तो उस कमरे की विंडो जहाँ पर वो प्रिजनर था इंटेंशनली सदाओं ने खुली छोड़ी है. तेज हवा से बहुत तेज आवाज होने लगती है एंड हाना कहती है कि वहाँ के हम कमरे की खिड़कियाँ बंद कराएं. मे बी वी हैव फॉरगॉटन, बट सदाओ उसे मना करता है वहाँ जाने से. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ही हरिडली woke up and went to that prisoner's room just to see that he has been killed and removed or not. But he found him there and he was recovering and there was a smile on his face. Okay, now Sadao said that don't think that I am going to asking your name, कि मैं तुम्हारा कोई नाम पूछने वाला हूँ और तुम मेरे से कोई उम्मीद मत रखना कि मैंने तुम्हें सिर्फ एज अ डॉक्टर ट्रीट किया है, मुझे तुमसे कोई सिंपैथी नहीं है. बट जो एनिमी है वो बहुत डरा हुआ है. ही वॉज जस्ट आस्किंग कि तुमने मुझे बचाया है क्यों, वाई यू हैव सेव्ड मी व्हेन यू वांट टू किल मी. जब तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुमने मुझे बचाया ही क्यों है. बट सदाओ ने इसका कोई आंसर नहीं दिया. सदाओ सिंपली सेड दैट ही इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर. नेक्स्ट डे अगेन ही वेटेड, क्योंकि अभी उसने बोला था दैट विद इन 3 days, मैंने आपको बताया बेटा दैट he has taken the time of 3 nights and that assassins will come over there and they will kill that prisoner. But 3 nights were over but no assassins turned up. कोई भी नहीं आया. After that 3 days, because daily सदाओ उठता है और सदाओ का काम है वहाँ जाकर देखना और वो फिर उसे देखता है वो और रिकवर कर रहा है डे बाय डे. ग्रेजुअली ही इज जस्ट रिकवरिंग वेरी फास्ट. तो अब लास्ट डे सदाओ बहुत फ्रस्ट्रेट फील करता है और उसे लगता है कि अब वो उसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसीलिए उस लास्ट 3 days के बाद वो उसके पास जाता है. एंड व्हाट ही सेड कि देखो नाउ आई कैन नॉट टॉलरेट यू, मैं तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, सो यू प्लीज़ लीव फ्रॉम हेयर, तुम यहाँ से चले जाओ. एंड वॉट एवर थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड टुडे इवनिंग आई विल जस्ट अरेंज ऑल दिस थिंग्स एंड यू विल जस्ट लीव माई प्लेस. तो अब सदाओ चाहता है कि वो किसी भी तरीके से वो जो प्रिजनर है वो वहाँ से चला जाए. Okay, that evening when he returned, he just arranged all the things for his escape. It means he has made all the arrangement of his escape and provided him all the things which would be required by him just for the survival, like some food, good clothing, blanket, water, everything was there. Moreover, a boat also. उसके लिए उसने एक बोट का भी अरेंजमेंट किया ताकि वो पास वाले आइलैंड पे जाकर कुछ दिनों के लिए छिप सके. एंड व्हेन द कोरियन फिशिंग बोट विल पास फ्रॉम देयर फ्रॉम नियर दैट आइलैंड ही कैन जस्ट एस्केप ऑन दैट कोरियन फिशिंग बोट. सो दैट्स व्हाई he has just made him understand everything very clearly and then he made all the arrangements and finally the prisoner escaped from there. Now Sadao is just asking to himself why he has allowed him to go. उसने उसे क्यों जाने दिया? What was the reason behind? और सिर्फ जाने ही नहीं दिया बल्कि वो उसके बारे में इतना सेंसिटिव था कि उसने उससे ये भी कहा था कि अगर उसके खाने पीने का सामान खत्म हो जाए, उसे कोरियन बोट ना मिले तो वो उसे इंडिकेशन भी दे. इट मीन्स ही ऑल्सो आस्क फॉर दिस दैट ही कैन गिव हिम इंडिकेशन थ्रू द टॉर्च लाइट एट द टाइम ऑफ डस्क. बिकॉज अगर वो अंधेरे में करेगा इंडिकेशन देगा
so maybe he will be caught. So that's why what he suggested, that he will just give him the indication at the dusk time, and he will provide him the food and everything if he will not escape through any Korean fishing boat. तो इसका मतलब कि वो उसके लिए बहुत केयरिंग है, उसकी केयर कर रहा है, उसकी परवाह कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है. एंड ऐसा ही नहीं, उसके जाने के बाद उसने 2-3 दिन तक लगातार उस आइलैंड की तरफ देखता था. व्हेन एट द टाइम ऑफ डस्क, इफ देयर इज एनी इंडिकेशन, इफ देयर इज एनी सिग्नल फ्रॉम हिज साइड, but there was no signal, and he was quite satisfied that finally he escaped safely. When the prisoner escaped, after that, next day, Dr. Sadao was called by the general for his emergency operation. When he went there and he operated his gallbladder, General's life was in risk. Dr. Sadao was feeling that for 12 hours nothing can be said, that he is going to be alive or not. After that, when General start recovering, gradually he recovered, and Sadao was totally confused that what he will tell to General, because the prisoner had escaped and he was quite scared. If General will ask about him, what he is going to answer. But that was not the appropriate time, because General was just then operated. So that's why he waited for the time, though he wanted to speak about the assassins, but he waited. Here the servant has returned, all the servants, those who have left after the escape of the enemy, they come back. They have cleaned the room. हमने आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि घर में कोई बुरी चीज़ आ जाए तो हम अपने घर को शुद्ध करने के लिए गंगा जल छिड़कते हैं, पूजा पाठ करते हैं. तो वो सर्वेंट्स भी क्या है, ट्रेडिशनली उन्हें क्या लग रहा था कि एक प्रॉपर वे में वहाँ पर सारी चीज़ें शुद्ध कर देनी चाहिए. क्यों? बिकॉज दे हेट, लिटरली हेट वेरी मच टू द अमेरिकन्स, और वो एनिमी उनके घर इतने दिन रह के गया था. So that's why they were busy in cleaning the room. Now, when General recovered, then one day Sadao spoke to him. Sadao just tell that prisoner had escaped. Hearing this, the General confessed his own mistake. अभी क्योंकि जनरल ने उसको प्रॉमिस किया था कि वो किलर्स को भेजेगा जो उसको वहाँ से मारेंगे और उसकी बॉडी को रिमूव कर देंगे. उसने ये भी कहा था कि विंडो खुली रखना, उसने ये भी कहा था तुम ये बात किसी से शेयर नहीं करना. तो यहाँ पर सदाओ पूरी तरह से सेफ था. जब सदाओ ने सुना कि जनरल कह रहा है कि yes, it was his mistake, he has confessed about his mistake, then Sadao relieved. He felt that now he is safe, and General has given this excuse that it was not just because of lack of any duty or patriotism, but just because of his illness. He has forgotten to send the assassins. It means now the complete blame was with the general, and the general requested him not to tell about this to anyone. After that, see, when Sadao returned at his home, he was again thinking that why he has allowed that enemy to go. He was just thinking that how Japanese used to hate Americans. Why? Because they are their enemy. But here humanity overpowered. यहाँ पर मानवता की जीत हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था. क्यों? क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन, एक इंसानियत के नाते बीइंग अ ह्यूमन, it is his duty to save our life. Being a doctor, it was his duty to save our life and to help the needy. तो यहाँ पर उसने उसकी मदद की. लेकिन ये क्वेश्चन उसके दिमाग में रहा. नाउ ही इज रिकॉलिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो अमेरिका गया था उसे कहीं रहने के लिए घर नहीं मिल रहा था, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था. उस टाइम पे
कुछ अच्छे अमेरिकन्स ने उसकी हेल्प की थी. He is just recalling the kindness of his anatomy professor, Miss Professor Harley, and his wife. When he was alone, when he was ill there, his landlady has served him. Though she was very voluble, very talkative, even then she was very kind-hearted. It means there at America also some good people has just shown their kindness towards him. So maybe just because of that, a soft corner was there in his heart somewhere for that American also. क्योंकि जब वो अमेरिका में रहा तो कुछ अमेरिकन्स ने उसके साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार किया था. Still, he is with this question in his mind that why he allowed that enemy, why he helped that enemy to escape. So this is the story of the chapter Enemy. You will just make the notes about this. Some note lines are there and some important questions are also written here. You will write the answer of these questions in the comment box, and if any query or any doubt will be there, you will mention it also in the comment box. Till then, bye bye. Have a good day.